Hello everyone. Today we have with us a very special guest who, apart from his looks, has definitely made an impact in the civil services examination throughout his academic journey. And as we discussed with Jayant about his academic journey for the civil services examination, there's much to learn from his journey about how he actually went ahead to prepare for the examination. From learning from his experiences of Vipassana meditation to how you actually made the decision of preparing for UPSC. But before that, a very brief introduction about Jayant. So Jayant is a pass out from IIT Delhi. He did his BTech and MTech from IIT Delhi. He's passed out in 2018, and since then, this was his third attempt. He's already in the Indian Civil Account Service and had secured the 298th rank in the previous attempt. And in this attempt, he's managed to secure the 56th rank with political science as an option. Now, so what we'll be doing in this session is we'll ask Jayant more about his experience, about how he went to prepare for the exam, and more importantly, what are the suggestions that he has for students who are choosing political science as an optional, and even from the general studies perspective, what are the things that you can keep in mind while you go ahead to prepare. So, firstly, congratulations, Jayant. Thank you so much. And let's first, before we talk about political science and general studies, let's first talk about your whole journey. So, from what I understand from the discussions we've had before this session, that you've had a very interesting journey. That at the age of 20, you went ahead to do Vipassana meditation, Yeah. and that is something that you mentioned in your DAF as well. Yeah. So, how was it that your experience of Vipassana is something that actually helped you in preparing for the exam? So Vipassana meditation I went 20 जब years का था and I was in third year college में. So that was unconnected to IAS in general, but उससे क्या हुआ, I realized a new dimension of my life in terms of spirituality opened up, and not that it has a big influence on me right now, but it made me realize about how I could lead a better life in terms of not getting attached to any one thing or getting a dogma in my life कि if I do not have this, then what will happen? If I have this, I'll be on the top of the world. So I could develop that, and IAS में in fact ये ऐसे help करा कि I had IIT में election on the same month that I went to Vipassana, and I stood up for the General Secretary of the Student Affairs Council वहाँ पे leadership position पे, and I could stand up for the elections because I was doing Vipassana, and I realized कि क्या हो जाएगा, and just go and give it a shot rather than be fearful about it or anxious about it or thinking much about it. So I just went, and that 1 year of General Secretary tenure, and that made me realize that I usually consider that as my first posting of IAS. कि वो जो एक्सपीरियंस था वो मुझे रियलाइज हुआ कि हम जो जर्नलिस्ट नेचर में हर चीज़ में कुछ इम्पैक्ट करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं फॉर द जनरल स्टूडेंट कम्युनिटी देयर एंड फॉर द पब्लिक एट लार्ज. तो वो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे यही करना, इसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, एंड इससे ज़्यादा मज़ा मुझे कहीं और नहीं आया, एंड मुझे यही प्लेटफॉर्म चाहिए, फैसिलिटेट करना है रादर देन अचीविंग समथिंग फॉर मी एज इन पर्सनली मॉनेटरी और समथिंग लाइक दैट. तो मे बी दैट विपासना हेल्प मी जनरल सेक्रेटरी का, एंड दैट 1 year हेल्प मी टू बी मोर फाउंड एंड डिटरमाइंड एंड pursue IAS as a career. So unconnected experiences, but I think no. But because why I was also wanted you to talk more about Vipassana is this, because you said right that it gave you a sense of equanimity कि अच्छा अगर UPSC दिया और नहीं हुआ तो क्या होगा, और हो भी गया तो भी all of a sudden कि out of the world. It's like it helped you realize that you could deal with success and failures both reasonably well. Yeah. And because when we say that prepare for UPSC, you have to be mentally strong. The mentally strong thing is this. Definitely. कि success आए बहुत अच्छी बात, नहीं आई तो भी कोई बात. And I think ये mindset is not just an add-on thing जो आपको UPSC में चाहिए या अच्छी बात है ना. I think it is mandatory because जब ये mindset होता है तब you can perform very well on that D-Day. I think that UPSC में personality test last में नहीं होता है, वो starting first day से चालू हो जाता है. मतलब that personality test is there वो पूरे एग्जाम में even before जो 1 year आप prepare करो, because D-Day पे prelims पे अगर आपका वो sense of composure नहीं है, confidence नहीं है, belief नहीं है, तो आप वो elimination गलत कर दोगे, आप कुछ गलत पढ़ लोगे, anxiety आ जाएगी. तो वो personality वहाँ test हो रही है. Means में आपको perseverance test हो रहा है वो 10 दिन, and आपका वो कैसे handle करते हो आप उस tension को, या जो भी tension अगर हो रही है आपको, एंड फाइनली इंटरव्यू में तो है ही पर्सनालिटी. सो आई थिंक विपासना वाला जो इक्वानिमिटी वाला चीज़ है
not just पूरे इस exam में, I think in general in life also, in any field, whether you base or outside it, it will help. And that is a very good thing to do. मतलब ऐसा कुछ spiritual या कुछ religious नहीं है इसके बारे में. I thought कि just that you become more enthusiastic about life and less fearful, develop more courage, and be more peaceful, at peace, and more happy in general. तो हाँ वो experience था. I went there for 10 days एक बार, and I plan to go again because अब exam से थोड़ा बाहर. I think you will be the true Vipassana mascot for people to actually learn that when we say कि preparing for the examination is not just reading books but developing that mental strength or personality भी. तो जब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर mental strength या personality कैसे बनेगी, so maybe one of the ways is also doing something like a Vipassana where you kind of discover yourself and learn to deal with both failures and successes with a degree of equanimity. Definitely. Great. So I think that's because this is something we feel is something जो आपसे बच्चे सीख सकते हैं. You know, they will learn from this. You know that people who get such good ranks like you had 98 last 298 last time, and then again the 56th rank this time. Because from the 298th rank, the prelims examination is what 10-15 days ahead. Yeah. Last time we got more time. We got 2 months. 2 months. This time it was 15 days, but I was prepared. So that thing that okay, जो होगा देख लेंगे. Right? So because I think that's kind of pretty important. Yes. Nice. So now moving beyond, you know, your journey in terms of how you actually went ahead to actually decide preparing. When did you start preparing exactly in your fourth year? 2016-17. That was not full-fledged preparation as such. As I said, I had this election and general secretary, and apart from that, yes, the thing that I went to IT for the studies. So that was the bulk. But I went to a coaching for general studies in Rajendra Nagar. So I used to And travel. you used to live in Rajendra. You studied in Rajendra. Rajendra Nagar, like till school. But after that, I was in hostel, so I used to travel down and drive down to Rajendra Nagar and used to attend the classes and go back. So that thing helped me, but I was not preparing like in a serious way. I just used to spend 2 hours on coaching for like 7-8 months. But that was critical for me because I thought that I will get a head start, and when I will begin self-studying, it will help me to know where to move with this information. Like you have a head start. Now coming to political science, which was your optional. So in terms of political science, you know, in 2018 and after that, when you actually started preparing for political science, what was your strategy to go ahead in political science? How did you approach the subject, given that you came from an entirely non-humanities background, right? What was your approach? How did you go about political science as an option? Yeah. So first of all, the selection of the optional, it is also a story. Like I chose chemistry because I was good in JEE chemistry. So I chose chemistry, and the coaching was inside IIT also, DIS का academy था. So I thought I'll do that and जल्दी हो जाएगा and अच्छा भी है. But one month, like 20 days into the coaching, I realized I cannot do this. I cannot do this. Like it is not what I thought. It is not that chemistry that I liked. Because this is honors level, right? Yeah, and there's more theoretical, not more numerical. जो हम JEE में देखते हैं. तो after 20 days, I was in the middle of a class, and for 2-3 days I was having bad days with chemistry. In the middle of the class, and I had this कि political science would be my second alternate option for the like when I was choosing chemistry also. तो in fact मेरे दिमाग में second year में I told my mom कि IIT में क्यों आया हूँ, मुझे political science चाहिए, मैं छोड़ रहा हूँ IIT में, political science और मैं DU में. I thought my mom would say कि no बेटा ये JEE अच्छा, and my mom was like अच्छा DU में कब से चालू है. She's not the right person to take advice. She motivating me to leave IIT. So political science मेरे दिमाग में था पहले से. I used to like that subject. तो उसके बाद जब मैं 20 days वो chemistry coaching में था, in the middle of the class I realized this is it. I cannot move beyond this. I just took up my bags, packed it, took an auto and traveled to Shivara ma'am's office in Rajendra Nagar. And मैंने मैम को बोला, मैम का जस्ट क्लास ही खत्म हुआ था 4-5 बजे, and भाग के मैंने मैम को बोला मैम मेरे को कुछ हेल्प करो, and she made me meet with the topper, and she told me that write something and show me whether you can write humanities. And I showed her, and she said take it, go ahead and take it. So she was there, and I took the optional. So in that sense, I started my journey from there. In the first attempt, as I gave it in the same year of my graduation, so I just followed ma'am's note. I was able to attend the coaching for like part 1A only with ma'am,
because I had this IIT वाला obligations and I could not travel that much. Prelims था, तो I preferred prelims पहले, and then 2018 में पहले attempt prelims के just बाद 3 महीना I मैम के notes तो थे and I just refer to notes, time ही था और उसी को concise करना, उसी को revise करना, वही था, and I scored 260 marks. Then it was like average-ish I guess. तो ये फर्स्ट ईयर में था, बट जस्ट आफ्टर राइट आफ्टर मेंस आई जस्ट इंक्रीज माय लिटिल बिट ऑफ सोर्सेज, मोर टेस्ट राइटिंग एंड शुभ्रा मैम का टेस्ट सीरीज था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड लाइक थोड़ा बहुत बुक्स उठा लिया था, अगर कुछ कोई टॉपिक नहीं है तो वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, फिर 2020 में और थोड़ा मैंने सोर्सेज और इंक्रीज कर दिया. No, but I think that's जो आप बता रहे हो उसमें I think there's that important take home message कि शुरू में don't run to books and start reading books. First do notes और notes के बाद ही if you want to top it up with some books and sources, that's the way to go. Yes, definitely. Okay, and what about test series? I mean, given that for any optional, test series is very vital, including for pol science. So for political science also, so when did you start writing test series? So yeah, after prelims I took ma'am's test series and I wrote that. Then for 2019 and 2020 exam, 2019 I took the test series of ma'am also and this Unique Academy also. So both I did, and I found that thoda, because I wanted to differentiate, not that कोई test series कम ज़्यादा, just wanted to have different set of questions being asked to me so that I can prepare better and I had more time. So it's all about what time do you have for the exam. If you are in the first attempt, if you are running into different test series or different books and different online material, then you will all be very haphazard and you will not be able to revise. But if you have a year and a half with you for the next attempt maybe, then you go for value add and more differentiation. And for 2020, I did it on my own and unique test series. I just followed that. So I did not want to manage both two test series at the same time. So in terms of like writing the test series, as you're saying that the first attempt you did the test series after prelims, and then subsequently you did it even year long. I took Shubhra Mam's test series just after right after prelims. So that's the thing, in the sense that because a lot of times students ask us, sir, should we write daily answers, should we write answers from the beginning itself, or should we like complete a certain chunk, revise it, and then go towards answer writing? Like if you have you're just starting about and you just have your notes and you're not even revised once, there's no point writing. Yeah, especially in your optional, because optional demands you more level of depth and analysis and more grasp on your notes. Questions are not that generic that you can just think on the top of your head and write. So you need to have some grasp. एंड इसलिए थोड़ा तो आपको वेट करना चाहिए कि एक बार नोट्स आपने खत्म कर लिए, वेट इन द सेंस कंप्लीट योर नोट्स व्हेनेवर यू व्हाटएवर पेज दैट यू हैव, एंड एक बार रिवाइज कर लो एंड फिर दे दो टेस्ट. तो मतलब कि एक बार पढ़ो, एक बार रिवाइज करो, उसके बाद टेस्ट देना चालू करो, टेस्ट दे दो, rather than कि पहले ही आपने आज पढ़ा और कल ही आप आंसर लिख रहे हो. वो तो पॉसिबल नहीं. मैं अगर आपको बोल भी दूं आप ये करो. No, because why I am emphasizing this is because apparently we come today online across many other things which keep saying daily answer writing and answer writing to begin. That's something that should begin only once you've revised. Yes, one revision at least, because कोई भी बुक भी आप एक बार पढ़ते हो उसके बाद you cannot recall or like write down is a more tougher job than recalling. So एक बार पढ़ के तो नहीं होगा. Passively, actively एक बार अगर आपने पढ़ लिया उस चीज़ को, मार्क कर लिया एक बार, फिर आप आंसर लिख सकते हो. बिकॉज आंसर तो आप देखो कभी भी लिख सकते हो, बिना पढ़ भी लिख दो, एक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, एक बार रिविजन करके क्वालिटी अच्छी होगी, एंड देन जब उस पर कमेंट्स आएंगे आप यू कैन वर्क ऑन दैट. सो एग्जाम का पर्पस पूरा ये है कि इम्प्रूव करना है. वॉट एवर लेवल दैट यू हैव टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव सेल्फ इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट कब होगा? जब आप यू आर एट अ स्टेज व्हेन यू कैन रिप्रोड्यूस वॉट एवर यू हैव स्टडीड एंड देन नो व्हाट गैप्स यू हैव. अगर सीधा जाके दे दिया, पूरा गैप्स लगेगा तो डीमोटिवेट हो जाओगे कि सभी गैप है, मुझे आता है इतना गैप ही गैप है, तो डीमोटिवेट हो जाओगे. आप टाइम वेस्ट भी कर रहे हो 3 घंटे लिख के टेस्ट को. तो रिवाइज वंस एंड देन व्हेन यू हैव सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, या सपोज आपको इतना ही जल्दी है तो कोई बात नहीं है, मतलब आप एक टॉपिक लो, उसको रिवाइज कर लो अच्छे से और उस टॉपिक का पेपर दे दो या 2 क्वेश्चन लिख लो उसके. डेली आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पढ़ लो पहले उसको. डेली आंसर राइटिंग का मतलब डेली आंसर राइटिंग शुड बिगिन मे बी आपने थोड़ा पेपर लेटर,
not day one daily answer writing. That is very I think utopian and impractical. True. Great. Because I think that's one clarification for the audience as well. Yeah. So, moving on, the next thing in preparing, what is it? Because in your journey that you felt, whether that is for general studies or a lot of times students ask us about current affairs, कि sir आपने current affairs कैसे किया? Or so what, in terms of your journey in preparing for the exam, how did you go about making notes, and what are the things that you feel you should not have done or could have avoided, which you eventually corrected, so that people can learn from your experience and probably. So current affairs में तो यही है, मुझे रियलाइज हुआ कि 2018 से थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है 2017-18 से, तो और तो करंट अफेयर्स में क्या, यू हैव टू बी क्यूरियस. कोई स्टैटिक सोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है. एक दो आ जाते होंगे तो उससे तो एग्जाम निकलेगा नहीं 6 नंबर से. तो you have to be curious and improve, because bulk of the questions are elimination and अपना gut feeling strong करना. And वो gut कब strong होगा आपका, जब आप you have read like supplementary information about topics that are in news, current affairs. So current affairs में टॉपिक अगर आया आपका न्यूज़पेपर में कुछ चल रहा है, यूपीआई के ऊपर कुछ चल रहा है, कुछ इकोनॉमी का कोई न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत पे कुछ लेके आया है, कुछ भी एनीथिंग दैट इज ए न्यूज़, आर्कटिक के ऊपर कुछ चल रहा है. So you just be curious and just type it on Google. Like Google is your friend here. And आप जाओ वहाँ पे 2-3 टैब्स पढ़ो, कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन गेन करो, एंड उसको एक्सटेंड भी नहीं करना है. इट शुड बी द राइट अमाउंट ऑफ टाइम, अबव एंड बिलो. लाइक ऐसा नहीं हमने यूपीआई गया सभी पूरा पीएचडी नहीं कर लिया. हाँ, तो आपको लग रहा है जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीन यूपीएससी का ट्रेंड, यू नो कि यूपीआई एनपीसीआई की जो चीज़ें आती है या फाइनेंशियल चीज़ आ रही है, या ज्योग्राफी में आपको रिसोर्सेज थोड़ी इंपॉर्टेंट, मैपिंग इंपॉर्टेंट हो रही है. तो मैपिंग इंपॉर्टेंट हो रही है तो आपको पता है मैपिंग के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप देख लो, सपोज ईरान में वॉर हो रहा है, आप देखो कौन सी मेन सिटीज़ है जहाँ पे कुछ हो रहा है. एलेप्पो में कुछ हो रहा है, सीरिया में, डमास्कस में कुछ हो रहा है, यहाँ पे यमन में कुछ वॉर्स हो रही है. तो आप जब जाके गूगल करोगे तो आपको एवरीवेयर इट विल हेल्प यू. क्यूरियस आप बनोगे, आप इंटरव्यू में कहीं हेल्प हो जाएगी आपकी. बट क्यूरोसिटी को एक लेवल में लिमिट रखना है, बिकॉज क्यूरोसिटी कैन टेक यू like far away from the syllabus and the exam. So don't do that. Develop a sense of time management, in the sense कि curious रहना है, because that is the strategy to go. But time management करके रखना है अपने आप को. So UPI पे आपको पता होना चाहिए कि इतनी information से elimination हो जाएगा, बस और कुछ नहीं चाहिए आपको. Finally on the D-Day you have to perform. You don't have to prove anybody else apart from UPSC or that. So basically ऐसा है कि what do you say this, कि scholar नहीं बनना है उस topic पे. You just have to be a curious and aware citizen कि हाँ, you get a basic grasp of the topic, so that you can eliminate options. And उसके अलावा don't get so emotionally involved in the topic कि the input output doesn't match. And at the same time don't be a robot. एक तो क्या curious you are going out of the way, and एक end है आपका scholar level पे जाना, एक पीछे passive level है जो काफी लोग करते हैं. यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, PhD I think कम लोग ही करते हैं. और वो पीएचडी करते भी होंगे, उनको रियलाइज हो जाता है ये तो बस ये रियलाइज हो जाता है. बट यहाँ पे रियलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है कि दिस इज नॉट द पैटर्न दैट यूपीएससी विल अवार्ड यू रिवॉर्ड यू फॉर. यहाँ पे मतलब ये वाला एंड ये है जहाँ पे लोग पैसिव हो गए, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब 1 घंटा एक जॉब की तरह पढ़ लिया एंड उससे कुछ आउटपुट नहीं निकाला. क्यूरियस हो गए तो आप क्या हो गया, एक्टिव बनना है आपको. मतलब व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, एक्टिवली सीक आउट व्हाट वैल्यू ऐड कैन आई टेक इट आउट, सम फैक्ट यू कैन टेक, सम स्टैटिस्टिक्स, सम रिपोर्ट. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन निकाल लिया, एडिटोरियल अच्छा नहीं है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा है, कैन यू यूज इट इन सम टॉपिक दैट यूपीएससी यूजुअली आस्क्ड, यू कैन टेक दैट आउट. एंड एक्टिवली जब आप सीख करोगे, और एक्टिवली कैसे सीख करोगे, जब आपको सिलेबस पता होगा, तभी आपको पता है कहाँ से ये कहाँ यूज आएगा पीछे. जब आपको सिलेबस पता है, पीवाईक्यूज आपको ग्रास्प है, तब इस दोनों का मैच करके आप बहुत टारगेटेड फैशन में न्यूज़पेपर पढ़ोगे. आपको पता है पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स पढ़ोगे नहीं, बट एक एडिटोरियल में आपको पता है इन्फॉर्मेशन इतनी यूजफुल नहीं है, या ये है मेरे पास इन्फॉर्मेशन, तो आप कुछ और देखो, नहीं है तो हटाओ उसको. रादर देन न्यूज़पेपर उठाया एंड एंड टू एंड पढ़े जा रहे हैं, 1.5 घंटा हो गया, बोला किसी ने 1.5 घंटा पढ़ना, 1.5 घंटा पढ़ा एंड बंद कर दिया उसको, तो मोनोटोनस हो जाएगा उससे आपका प्रिपरेशन. फिर आपको लगेगा यार ये क्या है, मतलब यूपीएससी यू शुड एंजॉय यूपीएससी की इन द सेंस कि एक सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए कि मुझे एग्जाम में क्रैक करना है, एंड फाइनली यही आउटपुट चाहिए मुझे. फाइनली ऑन दैट डी डे मुझे कैसे हेल्प करेगा ये न्यूज़पेपर.
सो मेरा एक यही होता था कि मैं रिवर्स सोचने वाला हमेशा रहता था कि 8 दिन बाद एग्जाम है चाहे 8 महीने बाद एग्जाम है, मैं रिवर्स सोचने की कोशिश करता था कि 8 महीने बाद एग्जाम है तो लास्ट के मंथ मुझे कैसी चाहिए अपनी प्रिपरेशन, तो उसके लिए मैं आज क्या करूँ। Exactly. तो जब आप वैसे सोचोगे और फिर डेली टारगेट्स और वीकली टारगेट्स में डिवाइड करोगे तो एक बिगर कंटेक्स्ट में आप अपनी डेली टारगेट्स को अलाइन कर पाओगे और आप एक टारगेट की टुवर्ड्स मूव कर पाओगे एंड रैंडम आप फिर पैसिवली इंफॉर्मेशन कंज्यूम। I think I'll probably just sum up because you said a lot of things, and it's important that you understand what Jayant is trying to say here is ki one thing is firstly that before you read newspaper, firstly understand, don't read it mechanically cover to cover. Before you go to reading the newspaper, the first thing is know your syllabus very well. Yeah. Know your past 4 or 5 years question paper pattern well, because that helps you to eliminate information that you don't need to focus on. Yes. And one thing I think this is something I've seen across students who are really good performers, is that there's a focus on good target setting. That you're saying that target setting daily or weekly करनी है, ऐसा नहीं कि 6 महीने का टारगेट आज से बन रहा है. And yes, you even if it's 8 months before the exam, so you want to prepare your targets and everything now in a manner कि last 1 month में सब रिवाइज हो जाए, क्योंकि जो लास्ट में आप रिवाइज करेंगे वही काम है, दिमाग में रहेगा, काम है. So rather than doing monthly targets, because some students are like, अच्छा first month polity and history, second month economy and geography, third month science and tech and something. Rather than that, make your daily and weekly targets. Yes. Rather than making too long targets. Yeah, right. Great. So I think that's a very valuable takeaway for anybody who's beginning their preparation. Now moving on further, if you could just throw some light on what do you suggest to students while they're making notes? Okay, say from Pol Science and from General Studies point of view, and if you were to add, what are the things that you would want to kind of avoid while preparing? क्या आपको लगता है कि बच्चे अवॉइड कर सकते हैं गलतियां while preparing? तो एक तो नोट्स में एवरनोट पे बना रहा था एंड इस एग्जाम में यूजफुल है कि आप इस मोनोलिथ एग्जाम को ब्रेक डाउन करो, तो वही आप एवरनोट पे भी मैं उसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, विच इज नाउ अ वेरी कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी टू डू. नोट्स आप बनाओ तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस सबको डिवाइड किया, उसके अंदर भी सब डिविजन्स. सो दिस टेक्नोलॉजी यू यूज इट इन अ राइट वे. एवरनोट पे आप सब डिविजन नोट्स आराम से बना सकते हो एंड सब डिविजन्स भी सिलेबस टॉपिक्स. सेलियंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने एक टॉपिक बना लिया, वोल्केनोज अर्थक्वेक जो भी है वो एक टॉपिक बना लिया, रिसोर्सेज एक टॉपिक बना लिया, सोसाइटी पे अर्बनाइजेशन, ये वो सोशल इश्यूज, वुमेन इश्यूज, आपने सब अलग अलग बना लिया. सो नाउ यू कैन प्लग इन इन्फॉर्मेशन जो आपको न्यूज़पेपर से मिल रही है एंड यू ऑल्सो हैव अ सेंस जो गैप्स रहेगा. By the end of a month or maybe end of 2 weeks, you'll realize that few of the things are not getting covered in newspaper. So go on and cover it from somewhere else. Maybe you started market में कुछ या कुछ और. तो यही active approach है. I remember because you had a very valuable point here. I'm sorry to interrupt. Yeah. But like कुछ चीजें हैं जो कई बार न्यूज़पेपर में नहीं कवर होंगी, ये आपको सिलेबस देख के समझ में आ जाएगा. Like on diaspora, I remember that the Indian diaspora is mentioned in the syllabus as a line. लेकिन diaspora पे कभी कवर नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है. क्वेश्चन आता है. तो उस तरीके से because it's kind of important कि सिलेबस को देखें न्यूज़पेपर पढ़ने के पहले. हाँ. Actively you have to. UPSC has provided you very little bits of information of what they expect. One is syllabus and one is their past year's question. So take that as a foundation. बाकी चीज़ें are just tools to accomplish what UPSC has given you as a goal. So if newspaper helps you, and mostly it helps, so now it has become conventional wisdom to consider newspaper as a base, but it's a superstructure. जैसे Marx ने बना रखा है. True. Your base is that. Now you have to link it like Marx does with your superstructure. Use your tools, different tools. You use your monthly notes for compilation and cover your syllabus current affairs. Use that extra bits of information from any online source or PSI tutorials or ORFK tutorials to cover topics that are in news or topics that have not been covered in news. And again, मतलब कुछ भी चीज़ जो न्यूज़पेपर से नहीं हुई है, find a new tool but do this. This is important. Not you take this as the base and syllabus तो supplementary चीज़ है, वो तो बस supplement करेगा न्यूज़पेपर को, ऐसा नहीं. उससे क्या होगा, फिर आप रिवर्स में जा रहे हो. ये गलत हो गया क्योंकि अब डायस्पोरा पे आपने बोला क्वेश्चन हमेशा आएगा एंड मेरा स्ट्रैटेजी जो था उल्टा करने का, मतलब बेस पहले रखने का सिलेबस को, उससे मेरे को बहुत इजीली पता है कि डायस्पोरा पे क्वेश्चंस पूछेंगे भी नहीं, लिखा है एकदम सामने. तो मेक क्वेश्चंस ऑन डायस्पोरा, मेक अ शॉर्ट
feeler on diaspora, and finally आता है question, आया इस बार question GS2 में भी, and हर जगह आता है, तो you directly answer that question without thinking कि newspaper में आया नहीं आया. Newspaper is not based, your syllabus and your PSI your previous year's question as the base. Yeah. Good. कि आप ऐसा नहीं कि पहले दिन उठा के न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, उसके पहले दूसरा ग्राउंड वर्क कर लीजिए, फिर न्यूज़पेपर पे आइए. Yes. Great. So I think that's one thing, and I think that this is that, and okay, I'm again stressing this कि आप ऐसा आपकी journey में, of 3 attempts and doing exceptionally well in the last year's attempt and then obviously this year's as well. What is it that you felt you have improved, या क्या चीज़ है जो शायद आपने पहले गलत करी थी जो आपने आप improve कर लिया, that people can learn from? Yeah. So due to paucity of time, not that I didn't knew, but 2018 में वही है, टेस्ट सीरीज नहीं करा इतने अच्छे से, ऑप्शनल you have to do definitely before prelims, advisable before prelims only completed. So ये तो मुझे पता था, and मेंस के एग्जाम देख के और लोग भी बताते हैं, उससे पता चल गया कि यार कुछ पार्ट्स ऑफ द सिलेबस हैं which are very important. वही again stressing it, ethics, essay, your optional and finally interview वो अलग stage है. तो these 3 parts कि ये important है, तो इस पे focus करो disproportionately. Ethics, essay and optional. Yes, these are important. But yeah, last 2 attempts से मैंने देखा कि UPSC has moderated optional के marks. This year also I scored 254 and नहीं, but this year the optional marks have been moderated across optionals. Across optionals it has moderated. So जो पहले रहता था कि ना optional ही differentiation, बाकी सबको side रखो, एक बार optional पढ़ लो, या ऐसा नहीं, optional is very important even now. 254 and 2 papers will make or break everything. But it is important, but ऐसा नहीं है कि optional पढ़ने से हो जाएगा. Now if you see my GS marks, which are one of the good marks this time, is 423. उसमें ethics पे 123 है, तो ethics has made the difference and वो important वैसे भी है conventionally. GS2 में भी 110 आया, तो वो 110 रेंज में जा रहा है वहाँ पे भी. GS1 में भी लास्ट टाइम मेरे 111 आए थे, which also helped me get into that list. तो ऐसा नहीं कि GS papers are not rewarding you. They are rewarding, they are equally important. GS3 में भी 100 या आसपास. And Pol Science is something that will help you in GS paper too. Yes, definitely. GS2 में इस बार भी questions कुछ भी पूछे, UK and India की judiciary systems कैसे match कर रही है या differentiate कर रही है. So you can use your political science का conventional wisdom जो भी यहाँ पे है. Yeah, so across papers you have to use. मतलब exam भी ऐसा ही है, syllabus भी ऐसा ही है, and finally UPSC भी ऐसे करता है. GS1 की geography GS3 में पूछ लेंगे, GS disaster management GS1 में पूछ लेंगे. अपना political science के philosophers are used in ethics. मैंने बहुत सारे questions इस बार मतलब कभी सॉक्रेट से चालू कर रहा हूँ, कभी किसी से, कभी प्लेटो से, कभी कुछ, तो क्रॉस डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इज यूजफुल इन एवरीवेयर एंड इन यूपीएससी एज वेल. I think that's been a pretty valuable set of lessons in terms of key, your apart from your optional, focus on your ethics, focus on your essay, and because they're also pretty highly rewarding, and that should help you a lot. So thank you, Jayant. Thank you for taking out the time, and I'm pretty sure you will have happening days ahead. And I just personally have a hunch I'll see you in way more close places apart from the administrative services, in way more colors as well. Okay. So thank you for taking out. Thank you very much.